So then we begin right away. Okay. So I would request everyone to please settle down. We are beginning with the second session of the Northeast Direct Selling Expo. So as we have already discussed, direct selling is an arena that has contributed phenomenally towards self-employment generation in the country, especially for women and different in India. It is my privilege to announce that about 50% of direct selling industry in financial year 2019 to 2020 offers millions of women the opportunity to be financially independent by the way of self-employment on their own time. Most of the times, this in form of part income. Hence, direct selling plays a critical role in empowering women by offering flexible employment opportunities and thereby contributing to overall economic development. The nature of products offered by direct selling business, along with the business opportunity, helps women in the country to turn their passion into an entrepreneurship venue. The growth of direct selling in India has been driven by women, and industry is leveraging benefits of social networking and adoption of communication to promote sales. I can proudly profess this women are the backbone of direct selling. That's what we celebrated this morning. They are the torch-bearers of direct selling in the country. Once again, congratulating each one of you, and to discuss and deliberate more on the contribution of women, we present to an all-women panel discussion. To begin the proceedings, I request Dr. Seema Sharma, Dean of Faculty of Commerce and Management, Assam Downtown University, will be moderating the panel discussion. To kindly take the dais, may I please welcome her on the stage. Now may I request Ms. Aparajita Sarkar, IDSA Secretary, to formally welcome Dr. Sharma ji. And also, Mr. Chetan Bharadwaj will be accompanying them as well. A small token of love and appreciation from our side. Thank you. So we have with us our first panelist, and now we are welcome on stage our women panelists, beginning with, we have four others joining Seemaji. We have Dr. Amenla Walling, representing Full Life Trading India. Other panelist, welcome. Please join us on stage. We have with us Ms. Anjala Datta, representing Amway India. We welcome you on the stage. We have with us Kenzio Fuka, representing K-Link Healthcare India Private Limited. Hopefully I pronounced your name right. And the last panelist of today's second session that we're conducting, Ms. Swapna Dengre, representing Oracle in India. We welcome you on the stage. Please join with us. Can we have a huge round of applause for all our panelists? Thank you for joining. So now I would request Dr. Sharma to open the stage for discussion.
Very good afternoon to all. So, I, Dr. Seema Sharma, Dean and Professor, Faculty of Commerce and Management of Assam Downtown University, on my own behalf and on behalf of Indian Direct Selling Association, I feel privileged to extend my warm welcome to all our panel members, participants, all the young and aspiring entrepreneurs, ladies and gentlemen, to today's event, the all-women panel discussion on the topic direct selling, the torch bearer of women empowerment, which is organized by the Indian Direct Selling Association. So this direct selling business, I have been attending the sessions and I have found that it's something which is very much interesting and providing a very good opportunity to the females of not only the whole world but especially the northeast region. And this industry, which is called as a future of India, and I think the 21st century is the fastest growing industry. This direct selling industry has contributed phenomenally towards self-development, self-employment generation in the country. And from selling at-home parties to selling via social media channels like WhatsApp, Facebook, etc., this industry has grown multifold. And this sector comes with a long history, as well as there is an added advancement with the added advancement in technology. There is this is like projected to magnify creating more career opportunities that are work-life balanced and financially encouraging. And in terms of gender parity, also this industry plays a very crucial role in empowering women by offering an opportunity for financial independence. And women have time and again proved that they have potential in infinite ways. There are almost more than 2 million women today who are at the center of this industry and have gone on to become successful entrepreneurs. And the most amazing part is that for this industry there is no age bar, and students, working professionals, and working parents, anybody can consider direct selling as a potential career opportunity. Gone are the days when we used to say that अच्छी सी नौकरी करना. What we say today is or the education system is also trying to make the seeker become a job provider. So with this industry, we may be able to produce more job providers or becoming self-dependent. So for this today, we have an ideal panel number. I would say that the fabulous four. We have four experts in the field of direct selling as our four panelists with us today, who are doing very well in their field of direct selling, and they will be sharing their success stories with us today. And for the panel members, I will say that we'll be allotting 10 minutes time to each speaker to speak about your journey, and then have a question answer session, which will be an open house discussion. And I'm sorry to say that I'll be interrupting in between if we are running out of time. So I hope this will be a very interesting session to highlight the achievement of the women entrepreneurs of our region and to know about their journey and serve as a medium to encourage and to provide a roadmap to our budding entrepreneurs, more specifically to encourage our women entrepreneurs in the direct selling industry. So
with the permission, I think we can start the session. My first question will be to Ms. Kanizeno Fuka, and you have been in this industry, involved in your business, and you educate and provide training to women in your region. And you are also contributing to the upliftment of lifestyle of women and making them empowered. And shifting from the, pardon? Okay. So there are some challenges that can be said to be inevitable, and not all challenges are negative, because learning from obstacles have helped you a lot to grow in your business. So we will kindly share with us the challenges that you have faced, and also how you overcame to achieve success. First of all, good morning to all of you. I'm so pleased and honored to be here sitting with this wonderful women sharing the panel. And thank you for having me. My journey with direct selling has been very lukewarm in the beginning, to be very honest. It was very lukewarm because back, back in Nagaland, in the year, the early 2000s, there were a lot of small MLM companies that mushroomed everywhere. So in that year, during those years, it was like it was more of a scam. This kind of business, direct selling was it did not have a good reputation, I should say. But then, as time went by, the company that I'm representing, Kelly, I heard about the company for it was in Nagaland for over a decade, and then so I've heard about it, and then but I never really thought about getting directly into the business. So, but that was before I got married. So when I got married, shadi ke baad to life will just pull you and tear you apart. So when I got married, and I have a job, I have a side job. I am in the government service. But even though I had a service, my husband was in running a small business. Everything was okay before the kids came. But once the kids came, it was so difficult, to adjust, to make things work. So we were thinking, what should we do? And then that time, though I've already heard about my company, about this direct selling business for a long time, I did not fully seriously take it. So after marriage, after the kids, I thought maybe I should try something else. Something that would not disturb my work as well, because I'm a government servant. So I was thinking, what should I do? And then during this time, one of my auntie, who is also an upline of mine, she's an amazing woman. She could not be here today, so she introduced me to this business, and I got into it. I was very slow, very skeptical at first, and then I had to, convince my husband that this company was genuine. This company can give us an income. So it took a lot of convincing on my part, to convince my husband to get on board. And then after a lot of convincing, I started to work. I started to consume the product. I was consuming the products from before also, but then I seriously started consuming the products to test them, and then later on, slowly, I came to realize that, the products were very, very genuine, very good. So I thought, why not join the company? Why not get into this direct selling business? That and what is good about this direct selling business was because
I was working also. I was a working mother. I had two small children, so it was more of a. So I got into it, and then there were a lot of challenges. A lot. I cannot even say. I cannot. If I count, you'll all be sleeping. So I will not all that, but there were family challenges. Kids, especially us working mothers, it's very difficult to adjust our time. So that was a big challenge, but I overcame it because my husband was very supportive, and then whatsoever, because this business is for everybody. It is for the rich, the poor, the illiterate, the educated, the uneducated, everybody. So the challenges where sometimes we work as of we work so much and we still don't get the results sometimes. So that can be very discouraging. But then it is always the income that comes, or the appreciation regard you get, or the self-satisfaction, when your work is done. That is so powerful, and then that made me overcome a lot of challenges with this direct selling business. So I think there was. Just replying to it. And you have talked about your experience as well as you said that somewhere you felt like you were slow. So I would like you to suggest our young entrepreneurs what do you think are the basic qualities that are like you would say necessary or best suited for becoming an entrepreneur in this direct selling business? Okay. I think generally it is for everybody, but for women in particular, women, we are versatile people. We play the role of a mother, we play the role of a daughter, beti ka, bahu ka, saas ka, dadi ka, nani ka. We play a lot of roles. And while playing these life roles, we become versatile. We become very versatile. And then in this direct selling business, you have to have a lot of faces. जो कसौटी जिंदगी के सीरियल में कोमोलिका का रोल था, जो it's like that, we have to have a lot of faces, we have to be versatile, and then that is one quality that we as women we naturally have. And then the second thing would be we love to talk. Women, we love to discuss things, two or three people women we get together, we start talking, we love to, not, I don't want to say gossip, I don't want to put the negative tag, so we just love to talk. So here, when you are in the direct selling business, you have that inborn quality that God has given each one of us women. So we talk, we can, you don't have to be you don't have to be educated, because हर किसी को मौका नहीं मिला पढ़ाई करने का, or to have a very good degree. For to become a doctor, you have to study medicine. For a lawyer, you have to study law. But then in this, all you have to need is work. But you can achieve anything. Me, this time I came with my mother to to attend this program from Nagaland, and I brought two of my kids along. So right now my mother will be having a great time with the kids. So why I brought my kids was because there was nobody to look after them. So that was a challenge. And at first when the company approached me, I was thinking, oh no, I don't have anybody to look after my kids. What should I do? But then why should that hinder me? Why should that stop me? I took the challenge, and then I said, I will go, I will participate, because this is such an honor. And then I came with two of my kids, and then I'm attending. So women, we have that natural talent. We have that natural this thing. And then we have mother instincts. Every woman has mother instincts. So
we are more, welcoming. We are more warm. I'm not saying that men are not warm. They are also, but women, we have that inborn instinct, mothering instinct. So it becomes less of a problem when we approach people. We are less intimidating to them. We can easily talk about, our businesses. So I think that is one. To name a few, we have a lot. Okay, we have a lot. I cannot limit the numbers, but I just want to point some few points. So those are the points that I think we need to have as to achieve as direct sellers. Your words were motivating and very beautifully you have explained your role, different roles that you play, and obviously this will help our young entrepreneurs. We will again come back to you. On now, we will be moving to Miss Anchela Datta. Like entrepreneurs are individuals who successfully transform an idea from theory into reality. And you have been a very bright scholar and a gold medalist, and your journey includes a role of a teacher, a researcher, and then transforming into I should say, successful entrepreneur. And on the basis of your experience and being a successful entrepreneur in the direct selling industry, um, I request you to tell us, we would like to hear from you that why do you consider that this direct selling industry is a good choice for women, and also you can throw some give some advice to our aspiring women entrepreneurs present. Thank you. Am I audible? So, first of all, a very good morning to all. Myself, Mrs. Anchela Datta Sharma, and I represent my company Amway. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मैं स्पीक इन हिंदी, ओके? So मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ IDSA को जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है आज, और सभी पैनलिस्ट को जो मेरे साथ हैं. रियली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टुडे. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी कंपनी को, बिकॉज ऑफ माय कंपनी इज माय आइडेंटिटी. So it's a very good question, man. Actually, everything started dreams. अगर आप मुझे पूछिए तो मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी. बहुत छोटी सी उम्र से मैं एक ड्रीमर थी. इसलिए अच्छा एजुकेशन में भी अच्छा ही था, और सोच रही थी कि होता है ना हम लोग का घर में कि अच्छे से, ऑलरेडी मैम ने बोला कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा एक जॉब लेना है. वहीं से शुरुआत हुआ था, क्योंकि मेरा पापा वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मेरी मम्मी भी टीचर थी. तो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो मैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ. मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ वहाँ से, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ. ट्रू. लेकिन जब जॉब के बारे में आ गए, तो जब पढ़ाई किया था तो सोचा था बहुत अच्छा जॉब मिलेगा. जो ड्रीम होता है ना, सभी स्टूडेंट्स का ही ड्रीम होता है. हम क्यों पढ़ते हैं अच्छे से? क्योंकि हमें घर में बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छा जॉब लेना है. और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सभी पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का कुछ ड्रीम्स होते हैं जो उन लोग का जब फुलफिल नहीं होते तो बच्चे पे डालते हैं. तो मुझे भी पढ़ाई जब मैंने किया था, मुझे डॉक्टर बनना था. मैंने एक बार एग्जाम भी दिया था, लेकिन फर्स्ट ट्राई में मुझे नहीं मिला, तो फिर छोड़ दिया. फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं आ गई, और वहाँ से भी जो मेरा पढ़ाई था अच्छा ही किया. लेकिन जब जॉब के बारे में आ गई, तो मैं रिसर्च सिस्टम में जॉब कर रही थी. नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं रिसर्च जैसे जॉब कर रही थी. लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरी भी दो बेटी छोटी छोटी. मुझे ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि मैं उन लोगों को छोड़ के आती थी, और जॉब के लिए फ्रॉम 9 to 5 मेरा पूरा टाइम में इन्वेस्ट करती थी किसी और के लिए. और जब छोटी बेटी को एज ए वर्किंग मदर कोई अगर हो तो आपको मालूम चलेगा, आप जॉब में रहते हो. क्योंकि मेरी छोटी बेटी उस समय बहुत ही छोटी थी, हर वक्त क्या कर रही है, चोट तो नहीं लग गया उसको, उसको अच्छे से मेरा केयर टेकर ने खिलाया पिलाया कि नहीं. ये सब एक एज ए लेडी, एज ए मदर, मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम, मतलब मैं हमेशा चैलेंज रहता था क्या हो रहा है. तो तभी मैंने, मेरा हस्बैंड वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशन में थे, तो हमने बोला कि नहीं ऐसा कुछ करे
कि मैं बच्चों के साथ घर में भी रहूं और एक मुझे अच्छा अर्निंग भी चाहिए, क्योंकि देखिए गुवाहाटी इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं कोई जॉब बंद कर दूं तो मेरा एक पूरा इनकम बंद हो जाएगा, मैं क्या करूं। तभी ढूंढ रहे थे, तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम लोग का इंट्रोड्यूस हुआ। और मैंने एक चीज देखा कि इनिशियली एज ए पार्ट टाइम आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। एज ए लेडी आप, मेरा जॉब भी था, बिजनेस भी मैं संभाल रही थी उस समय, और मेरा फैमिली को भी मैं देख रही थी। तो मुझे कुछ चीज यहाँ में दिखाई दिया कि ये बिजनेस एक पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल टाइम बेस पे आप कर सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस आप शुरू करोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली में, लैंड लेबर कैपिटल्स। ओके, हम लोग के पास नहीं रहता है। तो मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट मैक्सिमम हम लेडीज फ्रेंडली प्रोडक्ट्स थे। जो प्रोडक्ट मैं घर में ऐसे भी यूज कर रही थी, मुझे ब्रांड चेंज करना था। तो मैं जिस कंपनी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने कुछ चीज देखा। देखिए आजकल आप कुछ छुपा नहीं सकते, देखिए आपके हाथ में वर्ड है, आप सब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मैंने देखा इसका जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, और बहुत सक्सेसफुल मैंने लोगों को देखा जो लोग इस बिजनेस की वजह से सक्सेस हो रहे हैं। और लेडीज के लिए मैंने, और मेरा और एक इच्छा था कि मेरे साथ मैं बहुत सारे लोगों को अगर हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारा लेडीज का बहुत ही सपने होते हैं, लेकिन ऑलरेडी जिसकी शादी के बाद बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सपने को बांध कर रख देते हैं। शादी होने के बाद बच्चे आ जाते हैं, उनके बारे में सोचते तो कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। तो इस बिजनेस में मुझे देखा, मैंने जो बोला एक लो इन्वेस्टमेंट था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, फ्लेक्सिबल टाइम में मैं कर सकती थी। इनिशियली मैं अपने जॉब के साथ में पार्ट टाइम बेसिस में मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही। इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बात है, लर्न बिफोर यू अर्न। आपको सीखना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको कैसे, क्योंकि पीपल बेस्ड बिजनेस है, लोगों को मतलब समझने को आपको जरूरत पड़ेगा, कैसे आप पीपल स्किल आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने जब देखा तो मेरा जितना सारा क्वेश्चंस था कि मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, तो एज ए पैकेज मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे सब कुछ दिखाई दिया। मेरा विजन बड़ा हो गया है, मुझे अच्छा एक आइडेंटिटी चाहिए। आज देखिए, आज जो मुझे यहाँ में जो अवार्ड मिला है, रियली ये मेरे लिए ड्रीम था ऐसा कुछ। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म में जो खोज रही थी, तो मुझे सारा ऐसा पैकेज मुझे दिखाई पड़ा यहाँ पे। और तभी से मैंने शुरुआत किया बिजनेस का। डेफिनेटली आप जब शुरुआत करोगे सीखना पड़ेगा, मैंने बोला प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ा, सिस्टम के बारे में सीखना पड़ा, बहुत सारा चीज सीखना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी लेडीज को बोलूंगी एक ही बात, देखिए मैम ने मुझे पूछा है कि मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दूं, स्पेशली लेडीज को। मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हो कोई बात अलग बात है, लेकिन जो हाउसवाइफ हो, अपने आप को आप मतलब ऐसा मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया है अभी कि आप अपने आप को मतलब आप उसमें अपना एक आइडेंटिटी आप खोज पाओगे इसमें। मतलब ये ऐसा एक बिजनेस है जहाँ सब इक्वल है, इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अनइक्वल पीपल। यहाँ में एजुकेशन मैटर नहीं करता है, आपका इकोनॉमिक, आपका कैसा बैकग्राउंड है मैटर नहीं करता है। एक आपको मतलब एक आपका एक थिंकिंग प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और एक जज्बा होना पड़ेगा क्या मुझे मतलब कुछ कर दिखा ऐसा जो दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। ओके, ऐसा कुछ आपको करना होगा। और मैं हमेशा एक बात मानती हूँ, देखिए लेडीज, हम जब ज्ञान के लिए हम लोग किसके आराधना करते हैं? माँ सरस्वती की। यस, हम लोग जब धन के लिए किसको आराधना करते हैं? माँ लक्ष्मी के। उसी तरह शक्ति के लिए माँ दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं। तो कहीं हम तो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपका जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आपको ले आएगा। अगर आप कोई सोच रहे कि आज अंचला में वहां, तो इसलिए सिखाने के लिए टीम होता है, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। जो जो डायरेक्ट कंपनी से वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ लेडीज के लिए
from a फॉर यूथ के लिए, फॉर जनवरी के लिए वो लोग प्लेस करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि मैं बहुत समझती हूँ कि बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस। क्योंकि मैं अपने नजरिए से अगर मैं बोलूँ तो हमने शुरू किया था, मेरा जर्नी ऑलमोस्ट 12 इयर्स का रहा है। तो इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, मैंने ऑलरेडी बोला मैं पार्ट टाइम में मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को, और फिर आके मतलब 3 या 4 इयर्स में मैं जॉब से भी फ्री हो गई, जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था। मैंने कहा कि बीइंग ए फुल टाइम मदर मुझे रहना था मेरी बेटियों के साथ, तो 3-4 इयर्स में मेरा वो ड्रीम फुलफिल हो गया था। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब कोविड का सिचुएशन आ गया तो हम लोग पहले कुछ डर गए थे कि अभी क्या होगा, क्योंकि इट्स अ पीपल बिजनेस। यहाँ जैसे हाई टेक का जो चीज है, हाई टच भी बहुत जरूरी है, हमें लोगों से मिलना होता है। अगर मेरा कोई टीम अरुणाचल में है तो मुझे वहां जाके उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है, कोई अगर शिलोंग में है तो वहां जाना पड़ता है, कोई अगर गुवाहाटी से दूर कहीं जोरहाट में है, अपर असम में है, मतलब तिनसुकिया में, तो जाना पड़ता था। जब कोविड का सिचुएशन आ गया तो थोड़ा हम लोग डर गए थे, ऐसा नहीं, लेकिन थैंक्स टू आवर कंपनी। मैं पहले तो मेरी कंपनी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि नाउ मैंने एज ऑफ नाउ कंपनी इज द हाईएस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी, क्योंकि इतना यस कंपनी इतना सपोर्ट किया, इतना ट्रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग 8 से 10 तक उन लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम रख दिया, जो डिजिटली हम लोग एक्सेस कर रहे थे। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ शेड्यूल हुआ था तभी हमें ऑफिस जाना पड़ता, लेकिन अभी हम घर बैठे बैठे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग आ गया। फिर इस कोविड सिचुएशन को हम लोग कैसे मतलब फेस करेंगे, इसलिए ये जरूरी हो गया था कि मेरे सारे टीम मेंबर को मैं फिजिकल से डिजिटल में लाऊं। पहले दिक्कत था, लेकिन मैंने इसलिए बेस बोला क्योंकि कोविड से पहले ही हम लोग का कुछ शुरू हो गया था कि हम लोग का ज्वाइनिंग डिजिटल हो गया था, लेकिन बहुत सारे लेडीज को इस स्टेज में लाना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन दे आर बाउंड, उसको आना पड़ा। तो इसलिए मैं कंपनी का बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ, बहुत हेल्प किया सभी ने। और उसके साथ हम लोगों ने कुछ जूम में हम लोग कुछ जूम एप्स हम लोगों ने जूम के जरिए या गूगल मीट के जरिए हम लोग लेडीज बहुत सारे प्रोग्राम करने लगे। पहले क्या हुआ था, कहीं जाके मुझे करना पड़ता, मुझे टाइम देना पड़ता था, मेरा मतलब टाइम मनी एफर्ट सब चला जाता था। लेकिन घर बैठे बैठे आप ड्राइंग रूम में बैठ के
पहले क्या होता था, मैं एक जगह में जाऊँ, This is flexibility. flexibility बहुत बढ़ गया. हाँ. This has been a boon because of the technology. Because of technology, मैं घर बैठे ही सारे इंडिया को मैं टच कर सकती थी. तो पहले ये नहीं था. और उसके साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसा हम लोग का लॉन्च हुआ जो हमें बहुत उस तक के उस समय, जैसे सैनिटाइजर आ गया, फिर हैंड वॉश आ गया, मास्क आ गया, फिर इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज आ गया. इस प्रोडक्ट ने भी हमें बहुत हेल्प किया बिजनेस को ग्रो करने के लिए. तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है क्योंकि हम लोग बहुत ग्रो कर चुके हैं इस पीरियड में. सो थैंक यू. Thank you. So, in the last 20 years, more women in business are becoming full-time entrepreneurs, right? And this is something. There is something unique about this direct selling industry in which you are involved. So, as a key quality of many entrepreneurs, if I can say that like your innovation or ability to offer something interesting or new. So what is unique about your business, or what according to you is unique about your direct selling industry in which you are involved? Thank you for the question. And just to say a little bit about myself, I'm Dr. Amula Waning from Nagaland, and I'm so honored to be here amongst all the powerful leaders and especially the women here. And I must also thank IDSA for providing this platform where you have given the platform where all this direct selling industry can be validated, and it gives the legitimacy that it deserves, because there is a lot of negativity in the minds of people, like our other friends were also saying, and including me. I was someone who was not a networker at all, not from the ground. Network 12 years ago, I received, but that was not someone who speak one word. I'm someone who would not be talking to people. So marketing, there are viewers here who can be successful or wrong. I'm here to prove that even someone who speaks just monosyllabic words, if the company is genuine and if you can understand the passion of helping others to be successful, then you can succeed in network marketing. So with that few words, the product was doing the talk, not me. So it's a worldwide with a worldwide patency rights, and what it stands on the principle of together building people. So that is the unique I present. And when I talk about that, I think all network marketing companies, they stand on these principles only. Though our company for life has taken this as the slogan, I feel that network marketing is about building people. It's not about my success. When I talk about your success, when I look at your success, then my success comes by default. And I think that is the uniqueness about network marketing. We are representing different companies here, but we are not in competition with each other. We are all building this together. So I think network marketing is unique because it is about building people together. Next, please. So, what do you think, or how do you, in your words, how do you define who is a successful entrepreneur? You are Okay. happy with your position, and you are also
very much satisfied with the performance that each and every one of you is doing. You're contributing. So, in true sense, whom do you consider to be a successful entrepreneur? Because when you say success, for a student, success may be getting good marks or passing the exams. For somebody, success means something different also. So, for you, what is this success, and who is the successful entrepreneur? Okay. As I said, I'll be going more monosyllabic. And in the beginning, Dr. Seema was saying that you will interrupt us if we talk too much. But I think you will not get the chance with me because I'll be more monosyllabic again. Okay. Sorry to be bringing in my humor because. Okay. A successful entrepreneur, as you have rightly said, I think it's not just about the ranks, it's not just about the recognition, it's not just about the money, but when a person can have a team of people who are thankful to you, who are obligated to you, who feels indebted to you, I think that makes a person get the feeling of success because and that is possible only in a business like network marketing, because in any other jobs, in any other traditional business, we will be competing with each other. And if I'm the boss and I make my employees work, instead of they celebrating my success, they will be pressing me behind my back. But in network marketing, when I become successful, that's because my team members have become successful as well. I cannot be successful alone. And when my team members can celebrate my success, that gives us the true sense of success and achievement. Thank you. Now, moving to Ms. Sapna. Ma'am, you have a success story which can inspire any young women. And as an entrepreneur in this field for more than a decade, you have witnessed the direct selling market in the COVID period, and also prior to that, I would say that during the normal days as well as during the COVID period and hopefully in the post-COVID period also. What are the reasons that you feel that the direct sales industry is more suitable for women, as well as during your journey, maybe you have faced a lot of challenges as a part of your entrepreneurial journey, and did you ever give up when times were hard on anything, or we will also seek your advice to the young generation of women who aspire to be entrepreneurs in this field of direct selling? Thank you, ma'am. Thank you. আজি মোক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে মোৰ নাম স্বপ্না দিহিঙীয়া, মই অৰিফ্লেমৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ অকণমান মোৰ জাৰ্ণিটো মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, লগতে মেমে এটা কুৱেশ্যনটো ক'ম। মই 2008 পৰা অৰিফ্লেমৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আজি মই 13 years এইটো জাৰ্ণি, 13 years মই অৰিফ্লেমৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। 13 yearsত বিজনেছত বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ আছে, কিন্তু এই লাষ্ট পেণ্ডেমিক যিটো চিটুৱেশ্যন আহিলে সেইটো টাইমত বহুত মানুহৰ জব নোহোৱা হৈ গ'ল, বহুত মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ মুখামুখি হ'ল। সেইটো টাইমত আমি এজ এ ডাইৰেক্ট চেলিং হিচাপে আমি বহুত মানুহক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিলোঁ, হেল্প কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু এজ এ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে মোকে নিজে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ পাৰিব, কিন্তু আনক হেল্প কৰি আনক এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ আজি মই যিখিনি পাইছোঁ আন 10জনকো মই সেইখিনি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ লগত থাকি মই বহুত বেছি সুখী, নিজকে মই বহুত বেছি হেপী বুলি ভাবিছোঁ, মই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যিখিনি য়ং এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ আহিছে তেওঁলোকক মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতুকে আমাৰ বিজনেছটো পুৰা ডিজিটেলি আমি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট চেলিংটো, তেওঁলোকে যথেষ্ট নতুন মানুহখিনি ডিজিটেল
limited income. Unlimited, যিটো এটা জবত এটা লিমিট ইনকাম হয় বা বেলেগ এটা বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লেও তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব। আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা নাই। ইয়াতে এটা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, আমি টাইমটো দিব লাগিব, টাইমটো ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ ডাইৰেক্ট চেলিঙত কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নাই, যিহেতুকে আমি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে ৰিস্ক নাই, টাইমটো যিহেতুকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, আমি টাইমটো ইনভেষ্ট কৰি আমি বিজনেছটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে ইয়াতে টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি। চবে যিটো কৈ আহিছে ময়ো কওঁ, আমি টাইমটো আৰু এজ এ ওমেন হ'লে পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফ দুইটা বহুত এটা টাইমত প্ৰব্লেম আহি যায়, যাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবিলাক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল লাইফ প্ৰফেচনেল লাইফ দুইটাই খুব ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আগবঢ়াই লৈ যাব। সেইটো এটা বহুত ইয়াতে প্লাছ পইণ্ট। মই নিজেও এক্সাম্পল, আজি মই 13 years এইটো বিজনেছৰ লগত জড়িত হৈ থাকি, আৰু আনলিমিটেড ইনকাম। আৰু এই পেণ্ডেমিক টাইমত মানুহৰ কিমানৰ জব গ'ল, কিন্তু আমাৰ বিজনেছত মোৰ বিজনেছে খুব বেছি গ্ৰ' হৈছে। আৰু মোৰ টিমত এইটো পেণ্ডেমিক টাইমত বহুত বেছি মিনিমাম মোৰ টিমত আমাৰ অৰিফ্লেমৰ যিটো টিম প্ৰগ্ৰেম আছে তাত অলৰেডি 20খন গাড়ী পাইছে মোৰ টিমত। এনেকুৱা বহুত যিখিনি য়ং ষ্টাৰ্ছ আহি আছে নতুন তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে ডাইৰেক্ট চেলিং এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম যিয়ে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, কম সময়ৰ ভিতৰত নিজকে বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। চবৰে ড্ৰিম থাকে, সপোন থাকে, সেইটো সপোন কিমান টাইমত আপুনি ফুলফিল কৰিব পাৰিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু ডাইৰেক্ট চেলিঙত বহুত কম সময়ত আপুনি আপোনাৰ ড্ৰিমবিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰিব। আৰু মই যিখিনি নতুন এটাই কওঁ, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কোনো ৰিস্ক নাই, টাইম ফ্লেক্সিবিলিটি, আৰু চবতকৈ ভাল লগা এটা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বছ নাথাকে, নিজেই নিজৰ বছ হৈ কাম কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি এই ডাইৰেক্ট চেলিঙত এইখিনি কামেই যোনে ভালকে বুজিব লাগিব, কিন্তু নিজৰ নলেজ থাকিব লাগিব। যিটো ডাইৰেক্ট নহয়, কোম্পানীৰ পৰা ছাপৰ্ট থাকিবই, টিমৰ ছাপৰ্ট থাকিবই, প্ৰডাক্ট নলেজ, বিজনেছ নলেজ, কেনেকৈ আমি কাম কৰিম, চবৰে ছাকচেছ প্লেন বেলেগ বেলেগ, গোটেইখিনি লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িলে 100% চবেই নিজৰ ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিব পাৰিব, ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। This field for a long time, 13 years happening to feel that, and you are a successful entrepreneur in your journey. So, have you experienced any difficulties during this tenure, or any gender biasness? Apuni koribo nware, being a lady, I can't do it, I can't go ahead. Have you faced anything such of anything, and how did you overcome this? মানুহে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবে, কৰিব নোৱাৰা কোনো মানে তাত নাথাকে, যিকোনো প্ৰব্লেম। এতিয়া মই 13 yearsত বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ বিজনেছত, বহুত আপছ এণ্ড ডাউন আছে। যেনেকৈ পেণ্ডেমিক অহাৰ আগতো আমি বহুত জেগা ট্ৰেভেল কৰোঁ। আগতে গোটেই মোৰ নৰ্থ ইষ্টত টিম আছে, যাওঁ বহুত বিভিন্ন প্ৰব্লেম। মই অৰুণাচল গৈছোঁ, কিমানবাৰ মই লেণ্ডশ্লাইডত থাকিবলগীয়া হৈছে, বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ। কিন্তু প্ৰব্লেমটো প্ৰব্লেম কৰি ৰাখিব নালাগিব, প্ৰব্লেমটো আমি তাৰ এনচাৰ বিচাৰিব লাগিব, চলিউশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰে এটা ৰিজন হৈছে নিজকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে পজিটিভ ৰাখিব লাগিব, বহুত বেছি পজিটিভ হ'ব লাগিব, পেচেঞ্চটো থাকিব লাগিব, আৰু যিখিনি যেনেকৈ কাম কৰে তাৰ এটা চিষ্টেম নিজে বনাই ল'ব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। তেতিয়া যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনেই নহওক আপুনি 100%। আৰু লেডিজৰ কাৰণে মই এটা কথা কওঁ, আমাৰ নেটৱৰ্কিং বিজনেছত চবতকৈ ভাল মেইন বস্তুটো লাগে, যিটো আমি বিচাৰোঁ আমাৰ টিমত, মেনেজাৰ। মেনেজাৰ মিনছ হৈছে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিকে আমি মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু সেইটো আমাৰ লেডিজৰ ওচৰত 100% আছে। আমি যিকোনো চিটুৱেশ্যন মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, ঘৰেই হওক বা পাৰ্চনেল প্ৰফেচনেল, সেই মেনেজ কৰি যেতিয়া আমি কাম কৰিম, কোনো ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম মই পাইছোঁ। কিন্তু মই এটা প্ৰব্লেম এনেকুৱা টাইম নাই যেনেকুৱা সময়তে মই সদায় বিজনেছত গ্ৰ' কৰি আছোঁ। এতিয়া মই তললৈ চাব, তাৰ ৰিজন এটাই, মই বহুত বেছি পজিটিভ, আৰু মই নিজকে বহুত বেছি মটিভেট কৰি ৰাখোঁ। You are managing well on your home as well as your work and culture also. So thank you for the answer. Now the house is open for discussion. If the audience, our aspiring entrepreneurs or some students are also present here, if you have any questions, you can please put up your questions to the panel members. Request to the entrepreneurs, aspiring and budding entrepreneurs,
students and audience, if you have any questions for the panelists. Good afternoon, ma'am. I'm Anjali Chandak from Cotton University. What I wanted to ask is, as a student, how can we contribute to this field? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ষ্টুডেণ্ট হ'লেও বিজনেছটোত আগবাঢ়িব পাৰিব তেওঁ পঢ়াটো আমাৰ বিজনেছটোত ফুল টাইম দিব নালাগে ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সেইকাৰণে নিজৰ পঢ়াটো মেনেজ কৰি যিখিনি টাইম আপুনি বহুত এনেকুৱা আজি চব ষ্টুডেণ্টে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেই থকাতকৈ সেই সময়ত যদি আমি নিজৰ বিজনেছটো আমি ফ'কাছ কৰোঁ নিজৰ বিজনেছৰ বিষয়ে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ'কাছ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা এজ এ ষ্টুডেণ্টক যিখিনি লাগে সেইখিনি টাইম পঢ়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ এটা টাইম আপুনি ষ্টুডেণ্টখিনি নিজৰ বিজনেছৰ লগত যদি দিব পাৰে 100% বিজনেছটো কৰিব পাৰিব চলাব আৰু আমাৰ বিজনেছ ডাইৰেক্ট চেলিঙত দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি 3 to 4 hours টাইম দিলে বহুতখিনি কৰিব পাৰিব থেংক ইউ Thank you, ma'am. No questions. This shows that I think everyone is very much motivated by the words of our panel members. How beautifully they have expressed their views on the market scenario, as well as they have presented their experiences as well as the troubles they have faced being a woman in this field, managing their family, their work hours, and playing the various role as a woman, being a mother, being a wife, a sister, a bahurani, and so many, being a friend also. So my one question from me to all the panel members that there have been situations where you have been stressed, and sometimes it becomes very difficult to manage your family life, your what you can say married life, your relationship with your children and everything, and your friends and many things. So how do you overcome this stress, which is evident in everyone's life? Some it may be in different phases as well. So how do you overcome this situation, and how do you enjoy your work life, your family life, your motherhood at the same time? চবৰে ঘৰ এখন মানে চবৰে যেতিয়া হাজবেণ্ড বাচ্চা ইন লজ এখন ঘৰৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম থাকে বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম আহে সেইখিনি আমি মেনেজ কৰোঁ কেনেকৈ আমাৰ ডাইৰেক্ট চেলিঙত এটা বস্তু শিকায় সেইটো হৈছে আমি খুব ধুনীয়াকৈ চিষ্টেম এটা শিকায় যেনেকৈ মৰ্ণিং হাফত আমি বাচ্চা স্কুললৈ পঠোৱালৈকে সেইটো নিজৰ কাম 11ত আমাৰ মিটিং থাকিলে 11ৰ পিছত আমি মাজতে লাঞ্চৰ টাইমটো গ'ল তাৰপৰা 3 PM পিছত আমাৰ আকৌ মিটিং থাকিলে বা ট্ৰেইনিংছ থাকিলে সেই সময়ত আমি কেনেকৈ কৰিম গোটেইখিনি আমাৰ এটা চিষ্টেমত যায় আমি কোন প্ৰব্লেম আহিলে কেনেকৈ মেনেজ কৰিম আৰু আমাৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱা আছে চবে বাচ্চাও বুজে বাচ্চাও নিজকে মেনেজ কৰি ল'ব বিচাৰে হাজবেণ্ডেও মেনেজ কৰি লয় তেনেকৈ আমি এটা চিষ্টেম আমি আমাৰ কাম কৰি যোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু
it may be a temporary setback, but we should just keep it as a temporary. That should not be your permanent setback. Whenever we are faced with any problem, like a mother that you are, a superwoman that you are, you have the power within you to turn it to your advantage. Whatever disadvantages are there, we can turn it around. So what I did with my husband was I qualified for him along, and he sees it for the idea. He changes his mindset without me having to tell him, without us getting into an argument. So I think, besides whatever Madam has explained, that's how like we. If I mean, I think we have the power to tackle it in our own ways and getting things prioritized and working along. Thank you. Very good to all the aspiring entrepreneurs. Cecily, get back to you. ओके सो मैंने पूछा कैसे हम लोग सब मैनेज करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर इट्स एक्टिविटी मैनेजमेंट। तो मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये बात मालूम चल गया कि अभी मुझे जो इन्वेस्ट करना है टाइम इन्वेस्टमेंट, जो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम है, जो मैं पहले सीरियल देख के किसी के साथ फोन करके जो टाइम मैंने वेस्ट किया था उसी टाइम को मुझे लगाना है। मेरी भी 2 बेटी है और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट बाय चांस, इज बाय चॉइस। यस, आप एक चॉइस से आए। जिससे मैडम ने मुझे पहले पूछा मेरा इतना अच्छा क्वालिफिकेशन, इतना करियर रहने के बाद मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि आई केम टू दिस बाय माय चॉइस, क्योंकि मुझे सारा चीज यहाँ में मुझे मिलेगा, मुझे मालूम है यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि आप 1 साल में करोड़पति, 2 साल में करोड़पति आप नहीं बनोगे। आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह ये बिजनेस हमें सिखा देते हैं कैसे आप डिसिप्लिन रहोगे। आपको पहले क्या होता था जब जॉब थी, मैं सुबह करते शाम को आते थे, लाइफ क्या हो लाइक दिस, लेकिन मैं सीख बहुत कुछ मुझे सिखाया इस बिजनेस ने। और मेरी 2 बेटी है, और आप बिलीव करो आज जो मेरा एल्डर दादा है, आज का बोर्ड एग्जाम है और मैं यहाँ पे हूँ बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। यस, बिकॉज उन लोगों ने सीखा कि उसका पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली, मैं जो मैम ने पहले बोला, मेरे पैनलिस्ट ने किया, वी आर वेरी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है। मेरे घर में मैं पूरा मतलब ये बोल सकती हूँ कि कोई बैक फाइटिंग नहीं चल रहा है मेरे घर में। तो क्या कल्चर सीख रहे हैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन, तो वो लोग सीख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स वो लोग कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए। तो अभी उसको एग्जाम देने के लिए मैं पहले ही चलाई उससे, तो उन लोग को मालूम है किसके लिए कर रही हूँ। जैसे एसेट बेस्ड बिजनेस आपको मालूम है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए बिजनेस कर रही हूँ, तो आते हैं चैलेंज। ऐसा नहीं, मैंने जब शुरुआत किया था तो मेरे घर से, इनफैक्ट मेरे इन-लॉज ने भी बोला था कि ये बिजनेस करने के लिए आप तो मेट्रिक फेल भी कर सकते थे आप, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो आपको बहुत बोल लेना पड़ेगा पहले, जब शुरुआत करोगे बहुत चैलेंज आ सकते हैं, बहुत लोग निगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आप जो देख रहे हो जो बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, अगर विजन क्लियर है तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे बड़ा बात ये है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। थैंक यू। I agree to you that there is no shortcut to success. You need to do hard work, whatever it be it a full-time job, be it a job of a teacher or a researcher, you have to get through all these things. So willpower and hard work is very much important. All these wonderful ladies, panelists have explained it so well, and I am in total agreement with all of what they said. That I'm shaking my head so much, I feel like my head is going to fall off, you know. But yeah, adding to whatever they have said, I feel like you need to have planning, and since we women, we are very good at multitasking. Generally we are better than men. I'll just say it. Yeah. So this quality that we have about multitasking things, So I think we need to have a certain plan. We should have a schedule. And I have 2 kids. One is 6 and one is 4. They both go to school.
I manage the house, I go to my office, and whatever time that I have, I'm left with, I help. My husband is also in this direct selling business, so it's like a family business. So whatever time I'm left with, I put my time in it. I invest my time in it. Every little time that I get, I want. We go to interior places for trainings and all. We go house meetings. So I think in order to manage all these things, all these activities, all these duties that we have as women, we need to have we need to properly plan everything out. And sometimes जो हम plan करके रखते हैं वो नहीं होता. So during those times, we get stressed. Like ma'am has asked, how do we manage the stress? So I think the managing stress is all care. We have to, like all of them said, we have to be positive. We have to look forward to solving the stress, solving the solution, solving the problem, and getting a solution. So I think that would be my answer. Actually, certain qualities. It's all about how we use them. So we have the time, but sometimes we don't use it, or we do not know how to make a proper utilization of it. And obviously, your contributions in this motivating other women will help a lot. Okay, we give back to you, sir. Another Yeah, good afternoon, madam. Actually, my question is those are the four companies in the category women. How the process, how we choose the right company? Because since as a fresher, because all of the leaders represent different force company, and I think as a fresher, and those are we are coming here by the invitees, and by the four we have choose, not by choose from our side, but it is explained by the others. But after joining, after entries of this direct selling, lots of companies, numbers of companies. Then who is the right company for us, for a fresher? So it's a very, on behalf of the panelists, first I would like to say that it's a very tricky question. You are asking a shortcut to success. कि मैं कहाँ invest करूँ? No, not shortcut, madam. My question is that in now just the lots of companies, international companies there, Indian companies also there. So every company say they are the good, they are the number one, they are the good. Then this is difficult for the common people how to choose which company is the right. I think, sir, okay, my name is Chetan. I'm the General Manager of IDSA. And I think I can answer that question. So allow me, ma'am. Yeah. So, sir, don't consider direct selling. I have been telling this again and again. Wherever I go, it's not a rocket science, not something else. It's just a simple method of buying and selling of products. How do you choose, for example, which is the best bread that you want? Every company, be it Harvest Gold, Britannia, Mother Dairy, everyone claims their bread is the best. But then you have arrived at a decision that, for me, Britannia bread is the best. Same logic, please apply here also. Go through all the products that these companies are offering. Talk to as many people as you like. Just the way you decide which car is best for you, just the way you decide which pen is best for you, just the way you decide which shoe is best for you, you are the best person to decide which is the best direct selling company for you. Right, sir? So don't consider this as an alien process or something which is out of this world. It's a simple process of buying and selling goods, except that you're not purchasing products from shops, you are purchasing from these wonderful ladies. Right? Thank you. So I think we don't have any more questions. So we can conclude the session, and considering that the current situation, one can be certain that the direct selling industry offers one of the most dependable income generation option, and with a negligible or zero investment, we can say
time and space flexibility as well, and also a very simplified work process. And this industry, as we can see, is serving a ray of hope for millions of women, not only in our country, in our northeast region also. And a mindset has there needs to be, we need to have a mindset shift, which is key for our progressive society. And this shift can only start from our own homes and through the right childhood education. And I hope the lots of tips and tricks which we have discussed during this discussion will help our aspiring entrepreneurs, especially our women entrepreneurs, to have a balanced motherhood and entrepreneurship. And I thank all the panel members and our enthusiastic audience for the lively discussion we had, and hope the discussion will help our budding entrepreneurs in their journey for becoming successful entrepreneurs in the direct selling industry. Once again, I thank the organizer and the audience of our panel and our panel members for making this event a successful one. Thank you. Huge round of applause. What a wonderful session we have witnessed today. And at a time when women's contribution is rising all around the globe, today's session has certainly commemorated acknowledging women's achievement in direct selling. These powerful, charismatic, and dynamic women certainly encouraged many others to break shackles, to aim big, and realize their dreams. Thank you so much, wonderful ladies, for joining with us and also taking out time from your busy schedules. Now, may I request Mr. Chetan Bharadwaj ji and yes, Aparajita ji to please come forward to present the panelists with mementos as a token of appreciation from our side. So we have with us Ms. Aparajita Sarkarji, Secretary IDSA, and Mr. Chetan Bharadwaj ji. A huge round of applause for our talented, beautiful entrepreneurs. Okay, so then we'll take a break. So we'll be back for the final session after an hour. Please join with us. Thank you. Thank you.